everyone and welcome back to my channel. This is Miss Sana Nizam, 5th year medical student in Qihar Medical University, China. So in today's video I will take you through a very hectic week in my life spending in the hospital as a 5th year medical student at QMU, China, and I really hope you will like. So this is the first day of the week in the hospital and जो सबसे पहले काम हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाते ही किया is to have our PCR test for COVID-19. Basically PCR test is done to detect the presence of any viral RNA in our body and is capable of telling whether or not someone is having that specific virus at the very early stage of their illness. That is really awesome. And after our PCR test we had towards to take our classes. आज हमारी कोई rotations नहीं है, हमें सिर्फ 2 classes आज attend करनी है. And the first class was about cardiology जिसमें हम लोगों ने ECG and cardiac arrest को discuss किया. And then we go to take our second class in which we discuss about MRI, the procedure and the precautions. And after that we also visit the MRI room and did it practically on the patients. But as MRI room has strong magnetic field at all times and is strictly prohibited to bring any metal or magnetic objects into it, तो मैं अपने फ़ोन को साथ ले जा नहीं पाई and आपको दिखा नहीं पाई. So now we have arrived outside of the hospital और अभी हम कुछ देर में ही अंदर जाने वाले हैं. अभी हम instructions का वेट कर रहे हैं हमारी लौशी की तरफ से. Hey. Before entering into the hospital, we all were divided into 2 groups and we have to visit 2 different wards in alternate manner. Basically, this is the summer vacations time and हमारी hospital rotations चल रही हैं even in the vacations. And we are few foreigner students जो कि यूनिवर्सिटी में बाकी रह गए हैं and जिनकी hospital rotations चल रही हैं because most of our class fellows अपने घर country जा चुके हैं because of COVID situation back in 2020. By the way, our group run towards the orthopedic ward because this is the first ward where we are posted today. और यहाँ पे हम लोगों ने different type of dislocations discuss की with which majority of patients are suffering there. Like we discuss about dislocation of malleolus, shoulder dislocation, problem with acromial joint, spinal cord dislocation. Plus we also discuss that how can we fix all these problems either by medication or if needed surgery, then how can we done it properly. And in the last we took some pictures with our Laoshi means teacher and then we say bye to this ward and going to say hi to the next ward that is of neurology. And the hospitals here are really big. Like for going from one ward to another ward we also need to change badi buildings. That is really awesome. By the way, as soon as we reach in the neurology ward we start visiting the patients and the first patient to whom we visit today was suffering with stroke. The second patient was primarily suffering with a hypertension that leads to the cerebral infarction and the third patient was suffering with the Parkinson's disease. And after visiting the patients we head towards our classroom and there we discuss different CT scans of the patients to whom we visit today. Good morning everyone. The third day starts with a beautiful morning and we reach in the hospital at about 7 AM and going towards our destination, that is the respiratory ward. और यहाँ पर पहुँचते ही वो start visiting the patients with the head of the respiratory department and her assistant. And the head of respiratory department can only speak Chinese language. That's why she needs an assistant ताकि वो हमें translate करके बताती रही वो चीज़ें जो कि हमें head बताना चाह रही हैं. और Chinese language का थोड़ा सा issue भी रहता है for the foreigners जो यहाँ पे study कर रहे हैं. By the way, the patients to whom we visit today in the respiratory ward are mainly suffering with pneumonia and so many patients were suffering with COPD. That was really shocking for us. And now it's time to go towards the second ward that is of oncology and most of the patients there were suffering with breast, stomach and the lung cancer. And the last patient to whom we visit today was suffering with adenocarcinoma and was having the history of heart disease and diabetes from last 16 years. एंड आफ्टर विजिटिंग द पेशेंट्स हम लोग अपने क्लासरूम में वापस गए और थोड़ी बहुत गपशप लगाई अपने टीचर के साथ एंड देयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोविड-19 सिचुएशन इन आवर ओन कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड इंडिया में क्या सिचुएशन है कोविड-19 की राइट नाउ. प्लस वी आल्सो डिस्कस अबाउट द अराइवल ऑफ द फॉरेनर स्टूडेंट्स बैक टू चाइना जिस पर हमारे टीचर का कहना था वेरी सून. सो अभी मैं आई हूँ जी हॉस्पिटल से बाहर और अब मैं यहाँ से बाय करने वाली हूँ लियामफिया. आई भाइयों ईगा लियामफिया ये नूडल्स टाइप होते हैं बहुत मज़े के होते हैं बिकॉज मैं सुबह नाश्ता नहीं करके आई तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. एंड फाइनली अब हॉस्पिटल से काम हमारा ख़त्म हुआ है
और टाइम भी कम है चूँकि अभी बस आ जाएगी और फिर हमें वापस आना है। ऐसे हमें फिरने की परमिशन नहीं है बाहर जब हम हॉस्पिटल आ रहे हो तो, बट ये क्योंकि हॉस्पिटल के पास है तो हम भाग के यहाँ पे आ गए। इसमें कुछ डाल ली है, क्यूकम्बर डाला है, कैरेट्स डाल ली है, कुछ टाइप के नूडल्स हैं एंड कुछ बीच में सॉसेज डालेंगे एंड फिर बन जाएंगे नूडल्स एंड बहुत मज़े के होते हैं। सो मेरा भी यहाँ से हो गया है लियामफिया और अब मैं जा रही हूँ कुछ पीने के लिए, लेने के लिए, लाइक कोला शोला, जूस शूस। सो अभी मैं एंटर हुई हूँ जो शॉप में एंड यहाँ से मैं कुछ स्नैक्स और जूस वगैरह लेने वाली हूँ बिकॉज अब आ गई हूँ तो मौके का फ़ायदा उठाया जाए एंड कुछ खाने पीने के लिए उठा लिया जाए। सो दिस आर द थिंग्स जो मैंने बाय किया है यहाँ से। ये बिस्किट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, दूध एंड ये कुछ बॉटल्स हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें मुझे पड़ी हैं जी 42.5 में। Today's morning starts in the EEG room, that is basically a test that detects the abnormalities in our brain waves and is capable of diagnosing different brain disorders like epilepsy, seizures, etc. और ये टेस्ट हम लोगों ने काफ़ी बार एक दूसरे पे ट्राई किया, दैट वाज रियली फन। और लास्ट में वी आल्सो गेट द चांस टू सी द पेशेंट्स जिन पे EEG परफॉर्म किया जा रहा था। And after that our teacher take us to the ECG room and we did it practically on one of her class fellow. I really want to show you guys but he stops me from recording. Maybe he was feeling a little shy and he should. By the way, until now I'm feeling literally tired, maybe because I didn't sleep well last night. और मैं दिल में सोच रही थी कि फटाफट से rotations ख़त्म हो जाएं, but still we need to go towards the second ward, that is of nephrology. चलें उधर नहीं तो इधर सही, दुआ तो कबूल हुई because in the nephrology ward we didn't visit many patients, we just visit 2 patients and both were suffering with kidney stones. Finally the last day of the week and today we have no classes, no rotations but to attend our seminar, and this seminar was attended by many international and Chinese national doctors. Basically this seminar was about advances in cancer research and clinical collaboration, treatment of metastatic pancreatic cancer, hypofractionated neoadjuvant radiotherapy of soft tissue sarcoma. We have published all the data. और जैसे ही हमारा सेमिनार ख़त्म हुआ, दैट टेक्स अबाउट 2 आवर्स, तो मैं शॉप की तरफ भाग गई बिकॉज आई वाज फीलिंग लिटरली हंग्री। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए बाय कर ही लेना चाहिए हॉस्टल जाने से पहले। सो आई बाय अ बाउल ऑफ नूडल्स फ्रॉम हेयर एंड यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, मीन्स हॉस्टल। So this is how I spend my week in the hospital, that goes really well। और आजकल मेरी यही कोशिश है कि जितनी ज़्यादा मुझसे हो सके आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस शूट करूं, क्योंकि आप लोग मुझसे बार पूछते हैं कि अगर आप ही हम लोग चाइना में आते हैं MBBS डिग्री पे तो हमें किस तरह से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, हमारी किस तरह से हॉस्पिटल्स में रोटेशंस लगवाई जाती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अपने वीडियोज़ के थ्रू बताती हूँ, सिखाती हूँ और दिखाती हूँ। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग MBBS एडमिशन और CSC स्कॉलरशिप्स तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि आप लोगों को आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं। और अब यहाँ पे करती हूँ फाइनली वीडियो का एंड। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक इट देन डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिकॉज इट मीन्स अ लॉट टू मी। बाय द वे अब इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ जल्द किसी और न्यू अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।